what Ayurveda is actually. We are very fortunate that we have taken birth in India, and Ayurveda is a native medicine of India. They have told that this is timeless medicine, means anaditatvat shashvatat nityatvat, and that is traditionally there since beginning of this creation. Generally, modern terminology for massage is spa therapy. इस दुनिया में एक्सीडेंट छोड़ के सभी बीमारियां मंद अग्नि के कारण आती है, इसलिए ज्यादा चिली खाने वाले लोग गुस्सैल होते हैं। जनरली आहार आपका जितना सत्वगुणी है उसके अनुसार वो आनंद के हार्मोन्स बन लेते। जो रजोगुणी आहार का सेवन करते हैं उनको 17 गुलाब जामुन भी मिलेंगे तो भी वो असंतुष्ट रहते। तभी हम कहते हैं कि जब पेट खुश तो मन खुश। So Ayurveda talks about something very interesting. It is balance, lifestyle, and understanding our body early on. At Bhaktivedanta Hospital and Research Institute, this idea of holistic healing, not just treating a disease, but caring for a whole person, is something we truly believe in. Today, let's explore Ayurveda in a simple and practical way. So, to help us understand this better, we have with us today Dr. Nanasaheb Memane sir, and with over 20 years of experience in the field of Ayurveda, he combines classical Ayurvedic wisdom with personalized lifestyle and therapies for patients. So, welcome to the podcast, sir. Thank you, madam. So, we have some basic questions on what Ayurveda is actually. So, first of all, we are very fortunate that we have taken birth in India, and Ayurveda is a native medicine of India. Right. And our acharyas, the teachers of Ayurveda, ancient acharyas, they have told that this is timeless medicine, means anaditatvat shashvatat nityatvat. The medicine which is timeless is Ayurveda. Ayushaha Vedaha Ayurveda. The knowledge of life is Ayurveda. In short sentence, knowledge of life is Ayurveda, and that is traditionally there since beginning of this creation. Until today it is there. So it actually has many components, but how to stay healthy and how to get cured if we are diseased. That is the main two aims of this Ayurveda. And how to prevent from. So that is to be healthy is like how to prevent diseases. It comes in that. Okay. Pratibandhatmak chikitsa is the part of swasthasya urjaskaram kinchit. So when you want to stay healthy and even you want to increase the energy, you need to use this technique. That is Pratibandhatmak Ayurveda. We can prevent many diseases with that. Okay. So there is a common perception. Is Ayurveda only preventive or can it also treat diseases effectively? Yeah. Generally, the notion like the marketing is done in that way that Ayurveda is preventive medicine. Right. But as I told that shloka, swasthasya urjaskaram kinchit kinchit arthasya roganut. So one person who is healthy, to maintain his health, there is knowledge like dinacharya, rutucharya, then ratricharya, means what should be the schedule of that person in daytime, or what should be the schedule at night, and in different seasons at different places. There are ways to have your lifestyle. So it is not like one box fits for everyone. It's not like that. So as per the situations, the lifestyle is different. If suppose we are in now Vasant Rutu is about to end. Now Grishma Rutu will be starting, summer season. So we cannot continue mixed vegetable or mixed grains roti in summer season. And generally people have the notion that I want to have all types of nutrition, so I will mix all the grains inside and I will make that mixed grain roti. But wait, this summer season you cannot do that. And if you do that, then your digestion will be haywire, it will go low digestive fire, and you will get the diseases which will cause heaviness inside. So this is the approach of preventive health, that is swasthasya urjaskaram kinchit. And kinchit arthasya roganut. Arth means diseased. कोई भी ऐसा बंदा बीमार है, तो बीमार बंदे को ट्रीटमेंट कैसे देना है, how to treat that disease with personalized approach. Disease is there, like fever is jwar, it is called as jwar. But jwar has different aspects in chikitsa, treatment. So if you have fever and some other person have fever, so maybe both of these persons
cause is different, that's why treatment pattern also may be different. Right. So treating the disease is also one of the aspect of Ayurveda. So Ayurveda is of course preventive science because it treats you the ways and rules of living healthy life, and it is the way of treating the disease if it is curable. Like Yeah. Okay. both way it helps. So many people think Ayurveda means spa therapies or relaxing massages. Is that really what Ayurveda is? Uh, Spa therapy or massage, generally modern terminology for massage is spa therapy. So it is just a part of Purva Karma. So Ayurveda has many components, as I told you. Preventive healthy lifestyle is there, exercise pattern is there, how to do yoga is there for health, and then you have Panchakarma, detoxification procedures. So that Panchakarma detoxification, before that there is one Purva Karma, where one of the procedure is massage. And under that massage, all these spa therapies, everything they have developed in different way. But Abhyanga, it is called as Abhyanga massage, which actually makes you apply the oil in certain ways and certain strokes. That is Abhyanga. And Ayurveda is, of course, not only spa. Right. Like you have 200 rupees, and if you say ki, whether this 200 rupees is 2 rupees, yes, 2 rupees are in 200 rupees, but there are again 198 rupees alongside. So Ayurveda is not only spa, but this massage and all those things are part of Ayurveda. So we can say spa is derived from Ayurveda. Yes, of course. Of course. Okay. Ayurveda often talks about gut health as the root of all diseases. What exactly does that mean? रोगः सर्वे अपि मंदे अग्नौ. So this is one of the principle of Ayurveda कि इस दुनिया में एक्सीडेंट छोड़ के सभी बीमारियां मंद अग्नि के कारण आती है. का मतलब क्या है? अग्नि कहाँ रहता है? अग्नि जैसा चूल्हे में जलता है, वैसा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताः. ये जो शरीर है इसमें वैश्वानर के रूप में एक अग्नि होता है. भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं वो अग्नि हूँ, मैं वो लाइफ फोर्स हूँ जो पचाता है. क्या करता है वो? सभी जीवों में हमने जो खाया है उसको पचाने का कार्य करता है. और उसका जो शुरुआत है कहाँ से होती है? मुख से शुरू होके मोशन आने वाले ऑर्गन तक. तो ये पूरा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये पूरे ट्रैक्ट में अग्नि का स्थान होता है. मूलतः उसका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में उसका मूल एरिया है, वहां जो अग्नि कार्य करता है. तो ये जो अग्नि का क्षेत्र है, अलग अलग, जैसा अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुंचति च, मतलब क्या है? अन्न को लेना, फिर उसको लेने के बाद मिक्स करके उसको पचन करना, पचन करने के बाद उसको डिसइंटीग्रेट करना, डिसइंटीग्रेट करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब करना, और जो वेस्ट है उसको बाहर फेंक देना. So all these different types of procedures, there certain things are required. So Pachak Pitta is there, Saman Agni is there, Kledak Kapha is there. Different types of doshas are there which are the part of Agni. So they help in certain way. And in modern terminology, we may call it as like some enzymes, bile, and some organisms. Now they are talking about microorganisms in intestine. There are almost trillions of microorganisms which are there in intestine, which are helpful for the digestion. So they release some chemicals which are helpful for the digestion. So that in nutshell is called as, that complex energy is called as Agni in the body. So that Agni is specially resides in small intestine and large intestine and stomach. And if that area is okay, that area is good, functioning normally, then our all the systems get their nourishment normally, and then body remains healthy. That's why our acharyas have told, if your gut rogaha sarve api mande agnau, if your agni becomes manda, that is very low, it cannot digest the food, then all the different types of diseases which are possible are originated from that situation. So gut health is one of the only important factor causing diseases, except accident. Right. Yeah. So we need to take care of that gut. Yes. So we have been hearing of gut-brain axis. What is that? Yeah, gut-brain axis is the original terminology from Ayurveda actually. Recently in modern science they have included that. And thanks to Ayurveda, because all the books are translated in English.
Before 40-50 years, many acharyas have translated those, and modern science was reluctant to accept Ayurvedic principles initially. Yeah. But since 2000 around, they have naturally started accepting the principles. Now they have found that it is actually true. So ya eva majjadara kala, sa eva granidara kala. Majjadara kala is brain, granidara kala is gut, that is small intestine. Agni kshetra, where Agni resides, pitta, we call it as pitta also. Synonym of Agni is pitta. So that they say मज्जाधरा कला जो है वही ग्रहणीधरा कला है, मतलब जो ब्रेन का टिश्यू स्ट्रक्चर है या जो भी फंक्शनल फिजियोलॉजिकल चीजें हैं वैसे ही अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें हैं. अभी इसको मॉडर्न साइंस को डीकोड करने को समय लगा, लेकिन दे हैव फाउंड आउट दैट वेगस नर्व इज द नर्व व्हिच हैज कनेक्शन विथ ऑल द सिस्टम्स. और ये वेगस नर्व का जो कार्य है वो प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव दोनों ब्रेन के साथ चलता है इंटेस्टाइन के कनेक्शन में. सो नाउ दे हैव एक्सेप्टेड दैट इट्स अ फैक्ट दैट गट एंड ब्रेन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट्स व्हाई इफ यू ईट चिली, तो चिली खाते हैं तो अग्नि इतना बढ़ जाता है, बड़ा हुआ अग्नि दिमाग में एंगर लाता है, इसलिए ज्यादा चिली खाने वाले लोग गुस्सैल होते हैं जनरली. तो या फिर ज्यादा मीठे खाने वाले लोग मीठा खाएंगे गट में जाएगा क्योंकि ब्रेन कनेक्टेड है उसके साथ. तो मीठे का जो गुण है गुरुता, उस गुरुता से उस बंदे को नींद आने लगती, ब्रेन सोने लगता है. इतना बहुत माइन्यूट चीजों में उन्होंने देखा है. इसलिए आयुर्वेदा कुड क्रैक द सॉल्यूशंस एट वेरी रूट लेवल. बिकॉज वो क्यों होता है, कौन से गुण से बीमारी होती है इंटेस्टाइन में जाने के बाद, तो फिर वो उसी गुण का चिकित्सा करने में भी उसको फायदा होता है. लेकिन सभी बीमारियां केवल एक्सीडेंट छोड़ के मन और गट ये दोनों कनेक्टेड है ब्रेन उसके साथ. तो आयुर्वेद बोलता है सभी बीमारियों में एक्सीडेंट छोड़ के अगेन मन का रोल होता है. मन का वास हृदय और मस्तिष्क दोनों जगह पे बताया है. तो ऐसा है. तो गट ब्रेन एक्सिस ऐसा अंडरस्टैंडिंग है आयुर्वेद का. या एव ग्रणिधरा कला, सा एव मज्जाधरा कला. इसलिए कोई भी ब्रेन को ट्रीट करते हैं तो दवाइयां हम गट को सुधारने वाली देते हैं. तो अभी हम बोलते हैं ना कि ये सीरोटोनिन है, डोपामिन है, जो अच्छे हार्मोन है, जो आनंद के हार्मोन से, वो केमिकल है वो, लेकिन वो ऑर्गेनो केमिकल से, वो अपने आनंद के लिए बहुत आवश्यक है. लेकिन वैसे बाहर से बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किए जा सकते. 80% वो डिपेंड्स अपॉन आपका जो खाना है ना, आपका जो आहार है. आहार आपका जितना सत्वगुणी है उसके अनुसार वो आनंद के हार्मोन्स बनने. आचार्य आयुर्वेद ने बोला है कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना. आप यदि सत्वगुणी आहार खाते हैं तो आपका आयुष्य, आपका बल, स्ट्रेंथ, आरोग्य, हेल्थ, सत्व मतलब मन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ योर माइंड, और सुख आपका सुख मानने की क्षमता, और फिर प्रीति तो दूसरों के ऊपर कंपैशन करने की क्षमता. ये जो भाव है ये आपके सत्वगुणी आहार से बनते हैं. अभी मन में सुख मानने की जो क्षमता है वो खाने से कैसे बनेगी भला. लेकिन है ऐसा, सत्वगुणी आहार जब लेते हैं तो मनुष्य का मन शांत हो जाता है. तो उसको 2 गुलाब जामुन भी मिलता है तो भी वो संतुष्ट रहता है. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रजोगुणी आहार का सेवन करते हैं, उनको 17 गुलाब जामुन भी मिलेंगे तो भी वो असंतुष्ट रहते हैं. तो ये जो ब्रेन के साथ जो भाव है अपने, तो इसलिए झगड़ालू स्वभाव का कारण होता है रजोगुणी आहार. यदि हम वो बहुत तीखा चटपटा हमेशा ऐसा लेते हैं तो वो बंदा कभी संतुष्ट नहीं होता है. और असंतुष्ट बंदा जनरली लोगों के साथ स्टार्ट क्रिएटिंग डिस्टेंसेस बिटवीन देम एंड ही स्टार्ट्स आर्गुमेंटिंग एंड फाइटिंग विद अदर्स. इसका सॉल्यूशन क्या आप समझ सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन केवल मिर्ची छोड़ने में भी उसका हो सकता है. ऐसा गट ब्रेन एक्सिस है, बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि पूरा आयुर्वेद इसके ऊपर ही जिंदा है. तभी हम कहते हैं कि जब पेट खुश तो मन खुश. हाँ, सही बात.